बादाम, गरी, किशमिश, हम लोगों की खीर बनकर तैयार हो गई है। आप भी अपने घर में बनाएं और मुझे भी कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये इसी समय मिलता है, नया चावल आता है इस समय, इसका सीजन है। अगर नए चावल का बनाएंगी और भी अच्छा बनता है। अगर मेरी सांड चावल की खीर की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें।